Assalamu alaikum dear viewers. As you know from last two lectures, we are discussing the peninsular river system of India. Peninsular rivers are those rivers which are seasonal in nature, and the peninsular river system has been categorized into two. One is east flowing river system and second is west flowing river system. और जहाँ तक ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम का ताल्लुक है, इसमें हमने तीन रिवर सिस्टम्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है. And the remaining one of the important river system of the east flowing peninsular river system we are going to discuss today, that is कावेरी. तो आज हम बात करेंगे कावेरी के बारे में. कावेरी is the important river of peninsular India, an important river system of peninsular India, कावेरी. और ये रिवर जो सिस्टम जो है कावेरी रिवर सिस्टम, ये बहुत देर तक न्यूज़ में रहा, सुर्खियों में रहा, because there was a long pending dispute between the two states of India, that is Tamil Nadu and Karnataka, regarding the distribution of the water. और ये लड़ाई काफ़ी देर तक चली. And in the year 2019, the dispute was settled by the Supreme Court regarding the distribution of the water of the Kaveri river. So this is very important river system of the peninsular India. और जहाँ तक इस रिवर सिस्टम का ताल्लुक है, जहाँ तक कावेरी का ताल्लुक है, this is one of the best regulated rivers. The Kaveri river is one of the best regulated rivers, and 90 to 95% of its irrigation, 90 to 95% of its irrigation and power production, I mean hydroelectricity potential is being already harnessed. तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एक बहुत ही बेहतरीन रेगुलेटेड रिवर सिस्टम है कावेरी. और तकरीबन 90 to 95% of its water has been utilized for irrigation as well as generation of hydroelectricity. So 90 to 95% of the water of the Kaveri system is being utilized for generation of hydroelectricity as well as irrigation. So this is why the river system, that is Kaveri, which is originating, the origin of the river system, this river system is originating at Talakaveri on Brahmagiri range of the Western Ghat Hills. So far as the origin of the river system is concerned, this river originates in Talakaveri, which is on Brahmagiri range of hills in the Western Ghats, and this river is having an elevation of, जहाँ से निकलता है 1341 meter elevation this river system is having.
And this river is popularly known as the Ganga of the South. This river system, Kaveri, is popularly known as the Ganga of the South. कल अगर पूछा जाएगा which river system is known as the Ganga of the South, so the answer is, it is Kaveri. So far as the length of this river system is concerned, the Kaveri is having the total length of 800 kilometers. The Kaveri is having the length of almost 800 kilometers. And so far as the catchment area is concerned, this river is having the total catchment area of 87,900 square kilometers. This Kaveri river system is having the total catchment area of 87,900 square kilometers. So this river flows through, ये किन किन स्टेट से बहता हुआ निकलता है? It is तमिलनाडु, कर्नाटका. These are the major 3 states जहाँ से इसका पानी जो है फ्लो होता है, and केरला, the 3 states. और जहाँ तक आउट ऑफ दिस टोटल जो इसकी क्यूबिक कैपेसिटी है, कैचमेंट एरिया जो है 87,900 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका टोटल कैचमेंट एरिया है, आउट ऑफ दैट कैचमेंट एरिया ऑलमोस्ट 55.5% जो है इसका कैचमेंट एरिया आउट ऑफ दैट लाइज इन तमिलनाडु, एंड 41% जो है that lies in Karnataka, and 3.2% only lies in the Kerala. I will repeat again. So far as the catchment area of the Kaveri is concerned, this river flows through 3 major states of India. One is Tamil Nadu, second is Karnataka, and third is Kerala. And the total water draining in Tamil Nadu out of that catchment area, that is 55.5%, and in Karnataka it is 41%, and in Kerala it is 3.2% only. So far as the important tributaries are concerned, the important tributaries of this river system, Kaveri river system, it is Hirangi, Amaravati, Himavati, Shimsa, Kabani, Bhavani, etc. So these are some important tributaries of the Kaveri river system. Hirangi, Himavati, Amaravati, Lokpavani, Shimsa, Arkavati, Kabani, Suvarnavati, Bhavani. So these are some important tributaries of the Kaveri river system. Now, so far as the east flowing peninsular river system is concerned, we have completed this, and we have discussed 4 major river systems of the peninsular river system, that is Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. Now we are going to discuss the
वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आई मीन से वो रिवर्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, यानी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे वो मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ फ्लो करते थे और सीधा पहुंच जाते थे कहाँ पे, पे ऑफ बंगाल में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी जिनका फ्लो कहाँ पे है, वेस्ट की तरफ है। तो इसमें हमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम में हमें टू इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को डिस्कस करना है। वन इज नर्मदा एंड सेकेंड इज तापी। So we are going to discuss the two river systems. One is Narmada and second is Tapi. So let us discuss the Narmada river system. So we are going to discuss now the Narmada river system. तो जहाँ तक वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम का ताल्लुक है, it is the largest river system of west flowing, largest west flowing river system, largest west flowing river system of peninsular India. तो नर्मदा is the largest west flowing river system of peninsular India. और जहाँ तक इसके ओरिजिन की बात है, ये कहाँ से निकलता है, तो दिस रिवर originates in अमरकंटक plateau. This river originated in Amarkantak Plateau, which lies in Madhya Pradesh, MP. So far as the origin of the Narmada river system is concerned, this river originates in Amarkantak Plateau, which lies in Madhya Pradesh. और जहाँ तक इस दरिया के फ्लो का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा ये वेस्टवर्ड फ्लो करता है और एक रिफ्ट वैली से गुजरता हुआ निकलता है, यानी इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली. दैट रिफ्ट वैली इज बिटवीन द विंध्या रेंज which lies on the north and the Satpura range which lies in the south. So this river, I mean say the river of Narmada, it flows through a rift valley. एक rift valley से निकलता है, the rift valley which lies between the Vindhyan range on the north and the Satpura range on the south. So far as the length of the river system is concerned, the total length of the river system is 1310 kilometers. और जहाँ तक इसके टोटल कैचमेंट एरिया की बात है, तो इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है और द एरिया ड्रेन्ड, that is 98,796 square kilometers. And this river, the water of river Narmada, it is shared by किस किस स्टेट में ये इसका पानी पहुंचता है और कौन कौन सा स्टेट इसका पानी शेयर करता है. इट इज मध्य प्रदेश, MP, इट इज गुजरात, इट इज महाराष्ट्र. और जहाँ तक इसके वाटर शेयरिंग की बात है, तो ऑलमोस्ट जिसका टोटल ड्रेनेज है, आउट ऑफ दैट almost 87% is drained, 87% drained in Madhya Pradesh and 11.5% in Gujarat and only 1.5% in Maharashtra. तो जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितने भी इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी जो है, इसमें हिरन है और संग है
हिरांग है, ओरसंग है, बरना है, कोलर है, बोरनर है, बंजर है। तो जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो हिरन है, औरंग है, बरना है, कोलर है, जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उनकी लैंग्वेज तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। दे आर शॉर्ट फ्लोइंग, उनका फ्लो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अप टू 200 किलोमीटर तक इनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है। तो इसमें एक ही है एक्सेप्शन, दैट इज Orasan, and Orasan is the only which flows for a distance of 300 kilometers. So this is the only exception, Orasan, which flows for the distance of 300 kilometers. So this is all about the west flowing river system and the east flowing peninsular river system. So now we have completed the drainage system, और इसमें in next lecture we will see the difference between the Himalayan river system and the peninsular river system. Thank you very much. Wish you all the best.